Hello students, good morning everyone. Now first of all introduce yourself. I am Vinod Yadav as a lecturer Department of Chemistry in your Subraj Children Academy. Today we are coming with state of matters. Okay? बेटा हम आ जाए हैं स्टेट ऑफ मैटर को लेकर के. हाउ टू डिफाइन स्टेट ऑफ मैटर या व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर्स. ओके, तो मैटर जनरली एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स. वन इज द सॉलिड, अनदर वन इज द लिक्विड एंड लास्ट वन इज द गैसेस. But what will be the difference between solid, liquid and gases? How to define? तो आइए हम एक छोटे से पॉइंट में इसे पॉइंट आउट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द इंट्रोडक्शन. Introduction. Okay, matter which exist, matter which exist in three physical state. Three physical state matter which exist in three physical state, that is solid, that is one is solid and next one is liquid and last one is gaseous or gases. Okay, तो बेटा ध्यान से बात को समझिएगा कि कैसे हम हाउ टू डिफरेंशिएट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ऑल स्टेट ऑफ मैटर्स, ध्यान से बात को समझिए, बिल्कुल एक्चुअल चीजों को आप पढ़िएगा, अननेसेसरी चीजें हटा दीजिए. ठीक, ऑल स्टेट ऑफ मैटर्स, ऑल स्टेट ऑफ मैटर, all state of matter all state of matters depends on all state of matters depends on temperature and pressure. Only temperature and pressure. All state of matters, all state of matters means solid state, liquid state or gaseous state. Any matter which exist in solid phase or liquid phase or gaseous phase. All three distinct phases of the matter depends on temperature and pressure. If temperature is increased, matter which exist in different phase. Just like as if matter is solid, temperature is given the system, solid is converted
into liquid or vapor. Okay, if vapor may be converted into liquid or solid, pressure is increased on the system. Now we can say any state of matter which varied from one state to another state depends on temperature and pressure. This is the physical phenomena, not a chemical phenomena. This is the physical phenomena. Now पॉइंट आउट करिएगा बेटा, इसको जल्दी पॉइंट आउट करिएगा. ओके, थैंक यू. What will be the difference between solid, liquid and gas? Now next point, solid, liquid, solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas which exist in three different phases, in three different phase depends on temperature and pressure. Temperature and pressure in generally in case of solid, in case of solid, the constituent particles particle close one to another gives definite shape and definite volume. Gives definite shape and definite volume. Definite shape and definite volume. And the arrangement of constituent particles in definite order, in long range,
Okay, force of attraction in case of molecules, in case of solid, force of attraction हटा, रिमूव कर दो बेटा इसको. ओके, फास्ट नोट करिए. थैंक यू. Force of attraction, force of attraction, force of attraction in between the, in between the constituent particles or molecules. Force of attraction in between the constituent particles or molecules maximum in case of solid, in case of solid. Okay, but in case of liquid, how to differentiate from solid? Okay, how to differentiate from solid? In case of liquid, नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ बेटा. एक अच्छा नोट्स बनाइए ताकि पढ़ने में आपको नोट्स ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने के अंदर से इच्छा हो, और मेहनत से तैयारी करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए. बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम आ जाएगा. अभी हाफ ईयरली होने वाला है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए. 6-7-8 घंटे कम से कम पढ़ाई, 8 घंटे तो होना ही चाहिए 11th में. ओके, थैंक यू. इन केस ऑफ लिक्विड, in case of liquid, in case of liquid, the constituent particles, the constituents particles arrange in a lattice not long range, but the boundary of the, but up to the boundary of liquid, but up to the boundary of liquid, force of attraction in between the constituent particles, force of attraction in between the, in between force of attraction in between the constituent particles, is less than, is, हटा दे बेटा इसको ऊपर. ओके, between the constituent particles is less than,
solid. Okay, less than solid. Volume of the liquid, volume of liquid, volume of liquid is definite, but shape is indefinite. They occupied shape of the container. They occupied shape of container. They occupied shape of container which they are placed, which they are placed. Okay. Now, in case of gases, in case of gases, in case of gases, arrangement of, in case of gases, no any arrangement in one line, no, in case of gases, no any arrangement, no any arrangement no any arrangement. In case of gases, no any arrangement of the constituent particles of the constituents particles or molecules in generally shape and volume, in generally shape and volume of gases is indefinite. Okay. One of the gas nature, that is, gas is highly compressible, large extent. Gas is compressible from large volume to small volume. Okay. So now write the next point. Next point, gases is compressible in nature, gases is compressible in nature. Large volume to small volume. Okay. But solid and gases do not,
compressible, do not compressible in large extent. In large scale. ओके, कुछ भी लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बात ध्यान से समझ लीजिए। मैटर कोई भी हो, एनी वन मैटर विच एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मैटर का नेचर होता है वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करे। उनके 3 स्टेट होते हैं, और भी स्टेट होता है। चौथा एक प्लाज्मा स्टेट होता है, बट नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस। आपकी सिलेबस में ये बातें नहीं इंक्लूड की गई, बट आप जानते रहिए कि मैटर की 3 ही नहीं 4 स्टेट होते हैं। एक आपकी सॉलिड स्टेट होता है, दूसरा नेक्स्ट वन इज लिक्विड स्टेट, and another one is gaseous state, and last one is plasma state. But detailed discussion only 3 state: solid, liquid and gases. Solid, liquid कोई भी मैटर हो, अगर वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो नो डाउट दिस इज द फिजिकल फिनोमेना। In generally all 3 phases, that is solid, liquid and gases, which modify one phase to another phase, depends on external force, that is temperature or pressure. Now solid, liquid and gases which convert one to another, may be possible solid is converted into liquid, may be possible liquid is converted into gases, or gases is converted into solid, or liquid is converted into solid. This phenomena, this type of situation occur in the presence of only temperature or only pressure, or temperature and pressure both. Okay? अब ध्यान ये देना है कि कब कौन सी सॉलिड होगा तो उसकी अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी। हाउ टू डिफाइन सॉलिड प्रॉपर्टी, हाउ फिजिकली नॉट केमिकली, हाउ टू डिफाइन लिक्विड प्रॉपर्टी, और हाउ टू डिफाइन गैसेस प्रॉपर्टीज। फिजिकली यू ऑब्जर्व दिस इज द सॉलिड, दिस इज द लिक्विड, this is the gas. Okay, now write down next heading. Okay बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग अगले दिन डिस्कशन करेंगे कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैसेस है, और सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को फिजिकली कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके हम पॉइंट वाइज कॉलम बना करके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।